Friends, I hope some feedback is and let us start with the second week of February. This time in classroom itself, both of them कही आसुची आपण को जे पिला माने पेपर पढिबाटा बहुत जरूरी. Alright, so let us start with the second week of February. कौन कौन सब ए वीक रे हला ताको टिके रिकॉल करिवे जो माने पेपर पढी छथि. Alright, yes, I can see that. Soumya Ranjan, yes, good afternoon. So let's start पिला माने. Okay, so second week of February रे कौन सब इवेंट्स गुडा हे गला सब गोटे गोटे कर डिस्कस करला. See, this is only a gist of second week of February. या माने नो सब जिंस एतरे ही अछि. Alright, आपन को निजे सेल्फ स्टडी करिया पड़िबो. This is only a part of it. Okay, so let's start. Which is the host country of African Union Summit 2022? Right. हमने एक क्वेश्चन कहा विषय रे डिस्कस करूची ना अफ्रीकन यूनियन विषय रे. करेक्ट. So see, African Union जदि ASO हरिका दउचंती ताले जानि रखथांतु ASO रो जो जीके सिलेबस अछि त लास्ट पोर्शन रे गोटे पॉइंट मेंशन करछि कोन ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप आपण देखि छथि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज अ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम दैट साइड. जदि न्यूज रो अछि जाको कोन कर is the answer here किंतु Ethiopia सहित जदि मु यार geographical angle नेबी ताले कोन कोन हिजिबो ना which are all the neighboring countries of Ethiopia, right? गोटे हला आपण देखंतु ईस्ट साइड रे सोमालिया अछि. नेक्स्ट एपट साइड जदि एंटी क्लॉकवाइज जिबा एटी गोटे कंट्री अछि जिबूटी, राइट? ता ऊपरे गोटे कंट्री अछि एरिट्रिया, then Sudan, then South Sudan, and finally there is a country called Kenya. So these are all the you can say these are all the countries who are neighboring to Ethiopia, correct? Acha, next important, Addis Ababa is the capital, right? Acha, आउ गोटे जिंस मु कहि परिबि कि अफ्रीकन यूनियन रो हेडक्वार्टर कोठी अछि पिला माने. नंबर 1, आउ अफ्रीकन यूनियन रो हेड एबे जे अछंती से इथियोपिया रो लोक की. प्लीज चेक इट. ए दिरा जाको क्वेश्चन को भलसे टिके चेक करतो. ऑलराइट, वेरी इंपोर्टेंट वन. ऑलराइट, अच्छा, रिसेंटली जो नोबेल रे पीस प्राइज पाइले, नोबेल रे पीस प्राइज जो पाई चंती फॉर द ईयर 2021 सी एई एरिया रो आखा पाखा रो लोक की टिके चेक करिवे. Which country's head has been accorded with Nobel Peace Prize 2021? Say दीटा country भितरे conflict चालुतला और ताको से ठीक ठाक करले बोली ताको Nobel Peace Prize मिलछि. Alright, so please check it. तीनटा क्वेश्चन, अफ्रीकन यूनियन रे हेडक्वार्टर और हेड किए, एंड नंबर 3 असला कोन नोबेल पीस प्राइज एथर को पहले किए. Alright, is it related to Eritrea and Ethiopia? Check करो तो. Right, next important issue, development of design studios is a new sub scheme under which scheme? Scheme ra kono development of design studio, right? Tale eta kaha under rashtriya Indian footwear and leather development program, right? Development of design studios kaha under rashtriya, it's a sub scheme under Indian footwear and leather development program. What are the key details? Jodi koi bhi Indian footwear and leather development has been approved a continuation of outlay of 1700 crore as per the Ministry of Commerce, right? तामने देखो गोटे गवर्नमेंट रो जदले प्रोग्राम नले स्कीम थाए, अल्टीमेटली याको पैसा दरकार. जदि पैसा न मिलिबो ताले अल्टीमेटली स्कीम आउटडेटेड हि जिवो. नंबर 1, ताले प्रति ईयर जतबेले बजेट इंट्रोड्यूस करा जाय ताले ताको किछटा पैसा एलोकेट करा जाय. सो दिस ईयर एई प्रोग्राम को 1700 crore रुपीस एलोकेट करा जाय. नंबर 1. नेक्स्ट, development of design studio proposed outlay कितने अछि 100 crore is a new sub scheme under the scheme. Alright, IFLDP aims to develop infrastructure for leather sector, right? तो ए साइड रो जदी ऑफ फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब तले जदी मु कहिबी एठी लेदर रो सबुटु बडो प्रोड्यूसर को स्टेट, which state is the largest producer of leather? This is another important question. Right, check करंतु. खाली चुपचाप बसले होबनी कि मो भाषण सुनले होबनी. Alright, you have to search you by yourself something. जो क्वेश्चन कहि चालछि चेक करी मते कहथांतु. Alright, next, which country leads the giant Magdalen telescope project? ठीक है, देखो तो it looks something like this. It looks like this. Giant Magdalen telescope project किए recently
a project को lead करूची, the country is USA. This is easy. But who is this person called Magdalen? Magdalen किए थे पिला माने? Who was Magdalen? ठीक है, चेक करी कहले मते. Who was Magdalen? I hope I am audible. I hope I am audible clearly. Right? Who was Magdalen? पिला माने. Magdalen किए थे तांकर significance कौन? Now the US extremely large telescope program, which includes giant Magellan telescope. Normally, I mean, you know, conventional telescopes are different. Kintu jo giant telescopes are something very different. Okay, so is led by US and in partnership with Australia, Brazil. I mean, collaborating country kiye na Australia, Brazil, South Korea, and Chile. These are the host countries. US $1 billion project was ranked mission critical by 2022 decadal survey. Right? Last class नहीं पिला मैंने हमें just काली ही पढ़ुते space program विषय रे. देखो this is a telescope. Of course, it is a ground-based telescope. किंतु it is also related to exploration of space. Okay, it recommended federal support for final construction of the stages of giant Magellan telescope. Okay, so इस side to check करूँ तो हम तो कौन दो? Who was Magellan? Magellan किए थे? Next, Hemidactylus isai is the name of which new species identified in the Western Ghat? पहला मैंने Western Ghat आपने देखिए frequently news रहता है. कौन पाएं? This is a ecological. It is an ecological hotspot. तामने एठी अपना plant आउ animal रो, that is flora and fauna, ए दीटा जकंकर बहुत अधिका variety पाइबो. Right? Yes. 49 Magellan, that is correct. किंतु 49 Magellan किए थिले? अन्य ताको contribution कौन? Right? सेटा check करी कौन? So when I say Western Ghats is a ecological hotspot. तामने एठी बहुत प्रकार plant और animal रो species देखा SI. ताले ये जो species है इटा कौन basically? It is a gecko. It is a gecko. Gecko टा कौन basically? Yes, I said I asked him Magellan किए. Magellan was the first person to circumnavigate the Earth. तामने पृथ्वी रो round करी बुली के ऐसे वाला लोग लेके ना Ferdinand Magellan. Yes, that is correct. Okay, coming back to the question, Hemidactylus isai is the breed of, or it is a species of gecko. माने जाको जल्दी में कोई परिवी GTPT a breed से animal. Okay, so कोटी discover कराई ची Western Ghat. See, this is a very important question. Right, Hemidactylus SI. Next, Sariska Tiger Reserve is located in which state or union territory? It's a very easy question, but again a very prominent question. Sariska ta कोटी अछि? Sariska is in Rajasthan. यदि राजस्थान रे हमें देखिबा, suppose this is how it looks, Rajasthan. All right. ताले राजस्थान रे कौन अछि? एक तो केओला डेव घाना, तापरे गोटे अछि सरिस्का गोटे अछि, गोटे डेजर्ट नेशनल पार्क अछि. राइट, आउ गोटे केओला डेव घाना, आउ याको कोन कहउचंती ना भरतपुर. Right, so these are all protected regions, some of the protected regions in Rajasthan. Okay, sei bhitru gote hoji karna Sariska Tiger Reserve. Eta koti roche Rajasthan re. The Sariska Reserve is located in Rajasthan's Alwar district. So several measures of habitat management for tiger were launched. As a result, the tiger population in the wildlife sanctuary gone up by 25 grassland habitats. तामने एठी कोन हेची, it was कौन पे न्यूज रे थिला? कारण के एठी टाइगर मानकर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ुची. ऑलराइट. Now, which is the nodal agency for Powerthon 2022, a hackathon launched by Union Power Ministry? Right, ताले एटा की अछि? Which is the nodal agency? It is REC. Right. So REC Limited under Union Power Ministry was named Powerthon 2022 to find tech-driven solutions. Okay. It is launched under RDSS, that is Revamped Distribution Sector Scheme. Yeah, under या को launch करा जाएगी. So this is another important question जोड़ा February 2nd week रखला. Next, which union ministry launched Central Media Accreditation Guidelines?
सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस एटा किए लॉन्च करछि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये कौन लॉन्च कला ना सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस इट इंक्लूडेड stringent provisions under which the accreditation is liable to be suspended or withdrawn if a journalist act in a manner which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, the security of the state and among others. तामाने ये कौन कहउची ना जदी माने बेसिकली कौन करा जिवो ना जर्नलिस्ट मान को एक्रेडिट करा जिवो अंडर मींस यू कैन से इन वन सेंस कि तांको गोटे प्रकार लाइसेंस प्रोवाइड करा जिवो जदी से माने मींस एमिति जर्नलिज्म करचंती जोरा भारत रो एकता और अखंडता विरोध रे जाउची ताले यू नो तांको लाइसेंस कि तांको डी एक्रेडिट कर दियो ऑलराइट सो accredited media persons are prohibited from using the words accredited to the government of India, right, on their profiles. Okay, means in one sense we can say it is a restriction on the freedom of journalism. Then Kanchot festival is celebrated in which state or union territory? As you can see the image pila mane Kanchot festival koti celebrate hochi na Jammu and Kashmir re, right? Options तो एमती ही एग्जाम रे थिबो किंतु राइट आंसर तो गोटे थिबो कंचोत फेस्टिवल इज अ रिलीजियस एंड कलरफुल इवेंट्स in the followers of Nag culture. There are various kinds of people in our country, so Nag culture भी जो माने practice करते सेमान को ये festival. It was recently celebrated across Doda district of Jammu and Kashmir. The celebrate marriage of Lord Shiva and Goddess Parvati. जोटा हमर एटी षष्ठी शीतल षष्ठी बोली हमें सेलिब्रेट करजंती ओडिसा रो वेस्टर्न ओडिसा साइड रे से माने सेटा कोन करंती ना ई नाग कल्चर वाला ई सेलिब्रेट कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट करंती एंड प्रे फॉर देयर स्पाउसेस फॉर लॉन्ग लाइफ, राइट? एंड व्हाट एल्स? Pray for their spouses for long. It is called Gauri Tritiya. This is also called Gauri Tritiya. Tala question jodi hobo Kanchot festival koti celebrate hela recently. It was celebrated in Jammu and Kashmir. Okay. Space Application Center, that is SSC, and Physical Research Laboratory functions under the aegis of which institution? This is another special question pila hame. जदि हम कहिबी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जदि फर्स्ट क्वेश्चन ही पचारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रो हेडक्वार्टर कोठी अछि, where it is located, number 1, and where is Physical Research Laboratory located? ए दीटा जाको इंस्टीट्यूशन कोठी लोकेटेड अछंते टिके चेक करो. Okay, so Ahmedabad based Space Application Center is the दे आंसर बचो, and Physical Research Laboratory त माने ये दीटा जाको अहमदाबाद नहीं अछंती. They function under the aegis of ISRO. They are a part of ISRO. देखो आमे जहा को इसरो कहउचंती, इसरो इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन. इसरो अंडर रे बहुत गुडे प्रकार रो फैसिलिटीज काम करचंती, राइट? सो से भितरु गोटे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गोटे आउ फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी आउ गोटे. तो आपन को काम होची इसरो अंडर रे को एजेंसीज काम करचंती यार लिस्ट गोटे बाहर करी. एजेंसीज वर्किंग अंडर इसरो. आपन भाबंतनी जे इसरो गोटे माने श्रीहरिकोटा ही तार गोटे ठिकाना नहीं. ISRO रो बहुत गुडे there is a propulsion system, there is a cryogenic facility, there is a physical research laboratory, एमती बहुत गुडे mechanisms, बहुत गुडे agency ISRO अंडर रे काम करछि. Okay, so you need to make a list of all the facilities working under ISRO. खाली जानंतु आगे मन रखिया पे कोनी मु जानिया पे कहछि. All right, recently scientists from institute successfully demonstrated quantum entanglement using real-time quantum key distribution. They conducted hack-proof communication between two buildings separated 300 meters apart. Okay, तमाने recently कोन ना जदि अपन देखिबे जहा को हम वेब वर्ल्ड कहउचंती वेबसाइट्स करिका, when it is connected with www it is prone to cyber attack. साइबर अटैक तमाने ताको हैक करा जिबार पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ी जाय. इफ इट इज कनेक्टेड, इफ टू कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट, तले कंप्यूटर सिस्टम्स गोटा को प्रोटेक्टेड रखिया पय कोन कराई छी गोटे नुवा माने मेकैनिज्म गोटे नुवा प्रोसेस स्टार्ट कराई छी. सो या अंडर रे कोन करा गला रिसेंटली दिस वेरी न्यूज. ओके, दीटा बिल्डिंग रे 300 मीटर दूर रे थिबा दीटा बिल्डिंग रे ए सिस्टम टाको जस्ट चेक कराई छी whether it can work or not. Next, India recently held a high level conference on renewable energy.
along with which block? Ko block sahito na this was ASEAN pila mane. ASEAN ta kon basically? ASEAN is a block jaha ko ame kohchanti Association of Southeast Asian Nation. So ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations, right? So India recently held a high-level conference on renewable energy, along with which block? ASEAN sahito ye conduct karchi. It's a straightforward question. Out institution na dekhantu. I must tell you this thing. There is a term called TERI. TERI. Joda exam re padila bolia question. Yar full form hochi the Energy and Resources Institute. Eta poduchi exam re TERI. Then again you see there is another important question, that is renewable energy. पिला माने बहुत गुडे क्लासेस रे मो कहि छि भी ऑलरेडी जे रिन्यूएबल एनर्जी जहा को हम कहउछन ना एनर्जी इन शॉर्ट. एनर्जी रो डिफरेंट डायमेंशंस उडा को पिला माने टिके सर्च करबे, राइट? जेमिति गोटे प्रकार हैला कोन ना रिन्यूएबल एनर्जी, गोटे हैला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? हाउ इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी? ओके, fossil based energy, non fossil based energy सब गुडा. Okay, and what is the theme? पिला माने 80 question देखो. What is the theme for the conference? The theme of the conference was experience and innovations for integrated renewables market. This was the theme. If you can see it, this was the theme: experience and innovations for integrated renewable markets. So this was the theme of this event. All right. Next. Now, white-cheeked macaque, a new mammal species in the country, has been discovered in which state? Right? तामाने ए जो animal अपन देखी पारछंती ए white-cheeked macaque जाको हमें normally मांकड़ कहउछंती, monkey. So ये कोठी discover हैला recently अरुणाचल प्रदेश. Okay, पिला माने टिके मन पकांतो गोटे gecko recently कहली, गोटे lizard. So से gecko आउ याको टिके connect करिवा, right? So से gecko कोठी discover करा गला ना western घाट्स रे. आउ ए जो मक्का कोठी डिस्कवर हैला ना अरुणाचल प्रदेश. राइट, अरुणाचल प्रदेश जदी देखबे इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. राइट, एमते किछि अछि तो कथा होछि ए दीटा जगह ही काहे कि बिकॉज़ दिस इज वेस्टर्न घाट रो ए रीजन रे कोन करा गला से जो लिजर्ड, दैट मींस गेको को एठी डिस्कवर करा गला. आउ ए जो मकाक अछि, मकाक को कोठी डिस्कवर करा गला एठी अरुणाचल प्रदेश. राइट, बोथ ऑफ दीस आर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स मन रखिबे. These are ecological hotspots, right? These are two most important ecological hotspots of India. ये दीटा जगह एग्जाम रे बारंबार पडुची, right? ताले भारत रो एमितिया दीटा जगह जोटी सबुठु अधिका प्लांट आउ एनिमल रस वैराइटीज देखिया को मिले. से दीटा जगह होची नंबर 1 होची अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली द ईस्टर्न हिमालय, और नंबर 2 होची कोन द वेस्टर्न घाट्स. ओके, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न घाट. ये दीटा जगह ही इंडिया रो द ओनली 2 इंपोर्टेंट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स जोगरा की एग्जाम रे पड़ी जाउची. सो ए जो व्हाइट चिक्ड मकाक कोठी डिस्कवर करा गला रिसेंटली, इट वाज इन अरुणाचल प्रदेश. Right, there is a term called Zoological Survey of India. It is written here. या विषय टिके सर्च करिवे. ओके, आई विल गिव यू दिस पीडीएफ. तो आपन को काम पीडीएफ को देखि कि भी न देखि कि भी अपन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहां जहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सर्च करि चलथबे. ओके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोन तार हेडक्वार्टर कोठी वगैरह वगैरह. नाउ व्हिच हाई कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच टू हियर द पिटिशंस क्वेश्चनिंग बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब्स इन कॉलेज. राइट, दिस is a very sensitive issue. जोरा recently चली छी भी. तो इटा recently को high court under थला ना कर्नाटका high court. You all know it. It's not a new information. Karnataka High Court Chief Justice constituted a 3 judge bench, including himself, to hear the batch of petitions questioning the ban of hijab. Yeah, related bila mane यार गोटे political angle class रे मो कहितली. How polity is linked with it? There is a Karnataka Education Act. Karnataka Education Act 1983. राइट, पिला माने याको टिके लिखि नेबे आ याको लिंक करिया को चेष्टा करिवे का सत ना ए जो इश्यू चली जी ता सहित. How and why it is related to the Karnataka Education Act of 1983. All right, आ गोटे जिंस क्लास रे भी कहितली पिला माने link it with Article 14
आर्टिकल 25 ए दीटा आर्टिकल सहित लिंक करी ओके सो इन दिस वे पढ़िबाटा ना टिके कॉम्प्रिहेंसिव हो खाली गोटे पढ़िबा पई पढ़िबानी इश्यू टाको जानंतु आउ ताको मींस एनालाइज करिया को चेष्टा करथु जा बही रे पढुछन ओके नेक्स्ट now the Kameng sector where 7 army personnel died in an avalanche is located in which state or UT right ये पचार जी कामेंग सेक्टर विषय राइट सो कथा जी इफ यू नो द ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइट जदी नॉर्थ ईस्ट रीजन रो ज्योग्राफी विषय रे किछि भी धारणा थिबो ना पिला माने ताले ए क्वेश्चन आंसर ता आराम से करि पारि राइट केमिति ना कामेंग इज अ रिवर इन अरुणाचल प्रदेश डू यू नो इट कामेंग इज द नेम ऑफ अ रिवर इन अरुणाचल प्रदेश right so if you know it then easily answer to Arunachal Pradesh re bahari jibo okay so eta question number 1 number 2 ji kono now what is the meaning of an avalanche if you can see it on the screen itself gote image ru hi jani parutube avalanche jemti ame कहबा flood is a massive amount of water flowing in a splash in the sense in a short span of time mane suddenly gote bahut amount of pani jodi madi ase kotu gote due to heavy rainfall right due to burst of a dam on the upper side एगुडा सब हुए ताले फ्लड कहउछन ताको हमें राइट सिमिलरली avalanche कोन जदी बरफर गोटे नदी बरफर गोटे बन्या सियाडो माडी आसीबो ताको हमें avalanche कहउछन राइट सो एथिरे हम आर्मी सोल्जर्स माने किछटा इन डेथ हिज किछि जनकर सो सेटा कोठी हेतला ना अरुणाचल प्रदेश रे दिस वाज द इश्यू nearly 7 army personnel while patrolling in that area they were stuck in the avalanche okay next now what is the percentage of women representation of board seats in India as per women in the boardroom report when I say boardroom means जोटा के मैं board of director कहउछंती board of director कोनोसी भी कंपनी रे जो board of directors रहउछंती in India women representation in the board seats increased by 9.4% right so this is the increase and as per this what is the percentage of women representation in the board seats in India eta kete na 17.1% right I am talking about the board of director basically mane jo mane high level decision maker okay next which country's central bank has launched 5-year plan for financial standardization देखो तो एक तो ये इकोनॉमिक्स से गोटे चैप्टर रो आसी छी जहा को हमें FYP कहउचंती 5-year plan ओके वर्ल्ड रे 5-year प्लान रो कांसेप्ट लॉन्च किए कला 1928 रे लॉन्च करतला USSR ओके ताकू देखा देखी किए लॉन्च कला ताकू ना चाइना लॉन्च कला क्यूबा लॉन्च कला देन फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला परे परे कोन कला 1951 रे इंडिया भी ताकू लॉन्च करछि ऑलरेडी 5-year प्लान रो कांसेप्ट ओके वी विल टॉक अबाउट इट जदी कोनसी क्लास रे मु पढी नि आकू so 5-year plan रो कांसेप्ट रे अपन देखो recently which country launched the 5-year plan for financial standardization again it was launched by China right China agru भी launch करछि कि financial standardization पई प्रथम थर ताको launch करछि alright China's 4 government agencies including its central bank published a 5-year plan for financial standardization okay so पिला माने जदी मो कथा भल से सुनी परछंती ताहाले can you tell me what is financial consolidation or can I say fiscal consolidation what is fiscal consolidation okay याको लिखि नियंतु what is fiscal consolidation in any class I'll tell you what is fiscal consolidation but for the time being जानंतु what is fiscal consolidation the plan is to be implemented during 21 to 25 China will strengthen its cross border yuan payments so yuan is the currency of China right so my question is that yuan ro original na kon what is the original name of yuan ठीक है चेक करी कहले पिला ने what is the original name of yuan correct what is the original name of yuan next scientist from which country has achieved a milestone in nuclear fusion energy by generating 59 megajoule million I can say million joule of energy recently right तो ए कंट्री के थला ना यूके थला ओके या पूर्वरु जस्ट चाइना ए काम कर देछि
Scientists from United Kingdom have achieved a milestone in producing nuclear fusion energy or imitating the way energy is produced in sun. A team of joint European Taurus facility, that is JET facility at central England, generated 59 megajoules of sustained energy during the experiment. Right? What is this entire episode all about? ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करिया पई न्यूक्लियर आजिका डेट रे न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी रे तो एनर्जी प्रोड्यूस होउची, दैट इज ट्रू। तापरे सेटा को न्यूक्लियर पावर प्लांट रे भी यूज करा जाउची, किंतु न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी एबे भी बहुत एडवांस स्टेज रे नाही, तो या ऊपर काम चलची। न्यूक्लियर फ्यूजन रे सबडू बड़ प्रॉब्लम होची कोन ना, हाउ टू अचीव दैट स्टेट आ ताको मेंटेन करके रखिबा। ओके, नंबर 1। सेकंड होची को एमितिया कंटेनर रे हमें से न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को कंडक्ट करी, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। त माने जो कंटेनर रो करबे से कंटेनर इटसेल्फ मेल्ट करि जिवो, एते अधिक एनर्जी से होल्ड करि परिबोनी। नाउ India, which Indian city has the most traffic congestion as per TomTom traffic index? Right? को एमतिया सिटी अछि जोटो सब अधिका ट्रैफिक प्रॉब्लम फेस करंते लोक माने, इट इज नो डाउट मुंबई। राइट? एटी आपण मरीन ड्राइव रो गोटे सीन देखि पारुथिबे, सो इट्स मुंबई बेसिकली जोटि सबडू अधिका ट्रैफिक कंजेशन होछि। सो नेक्स्ट वन, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दैट इज एजर, is published by which institution? ताले एजर को किए पब्लिश करूछि? इट इज प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन annually conducts an extensive survey in schools to analyze the learning outcomes of student। देखो लर्निंग आउटकम्स रो माने हम गोटे तो ए पैरामीटर नहीं परिबा, रीड राइट, रीडिंग एंड राइटिंग नहीं परिबा, ता सहित कोन ना कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, दैट मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। गोटे पिला जदी स्कूल जाउची ताले बेसिक कैलकुलेशन करि परछ ना नहीं, किछटा टेबल्स मने अछि ना नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ओडा करि परछ ना नहीं। ओके, सो दीज आर व्हाट आर कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। किए याको रिलीज करछि ना? प्रथम फाउंडेशन याको रिलीज करछि। ओके, नेक्स्ट, the National Center for Excellence in Carbon Capture and Utilization, that is NCOE CCU, has been established at which institution? Eta hela IIT Bombay re। Okay, a factual question again. An ancient Roman settlement has been recently found by the archaeologist in which country? Right, this is a picture of Roman settlement apan dekhantu। Yes, I asked about what is the other name of yuan ro out na kon pacharthili, it is renminbi। Niranjan, that is correct। Okay, मन रखिबे, renminbi is the original name of yuan। Okay, so recently कोठी गोटा रोमन सेटलमेंट डिस्कवर कराइछि, एटा होछि यूके। राइट, अपन टिके नोटिस करिवे रोम रो आ यूके रो प्रॉक्सिमिटी केते दूर रहउछि। राइट, जदी इमेजिन करंतु एटा हम इंडिया हुए ताले जदी एमिति जिबा ताले एठी अफ्रीका पडिबो। राइट, एमिति अछि। राइट, दिस इज अफ्रीका। राइट, एमिति अछि। एटा होछि इटली एंड रोम, तापरे एमिति करके जाई छी। राइट, तमने यूके कोठी रहउछि, यूके पाखा पाखी रहउछि एठी। राइट, आ रोम कोठी रहउछि, रोम रहउछि एठी। तमने ए सिविलाइजेशन ट्रांसफर हेछि कोठी ना एठी की भी जाई छी, दैट मींस यार लिंक यूके सहित भी थिला। रिसेंटली गोटे रोमन सेटलमेंट कोठी डिस्कवर कराई छी ना यूके रे। राइट, आई होप यू गॉट इट, दिस इज आवर इंडिया। एठी इंडिया अछि, आउ जदि हमें इंडिया रो नॉर्थ वेस्टर्न साइड को जिबा ताले हमें एठी कोठी यूके पाइबा, आउ रोम आउ यूके रो ए कनेक्शन ता रिसेंटली डिस्कवर हेछि। ओके, नेक्स्ट, so the researchers from United Kingdom found an ancient Roman settlement site while investigating the route of the construction of upcoming high speed railway। माने this is very common actually, and very surprising। जेतबेले हमर इंडिया रो नॉर्थ वेस्टर्न साइड रे राजस्थान रीजन रे जेतबेले ब्रिटिश माने रेलवे लाइन बिछौथिले एई रीजन रे, सेतबेले गोटे बहुत बड़ सिविलाइजेशन रो डिस्कवरी हेतला, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अपन राखल दास बैनर्जी तापरे रिलेटेड लोकों का ना सुनथिबे। हां, से हिसाब रे अपन देखंतु इन द सेम मैनर गोटे हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछा जिबार प्रपोजल थिला, आ से प्रपोजल थ्रू रे से काम कला बेले ही गोटे नोआ रोमन सेटलमेंट डिस्कवर कराइछि। Okay, the scientists could find 40 decapitated skeletons which were likely to have been executed criminals
रोमन माने बहुत स्ट्रिक्ट थिले जुडिशियरी को नेकी सो ई 40 टा स्केलेटन्स मिली आउ many of these were buried in graves with their severed heads their heads were chopped off and they were buried and between the legs and their feet the team earlier mane gist of the story is that UK रे यांकर माने गोटे सेटलमेंट मिली छि कार रोमन सिविलाइजेशन रो okay Australia has recently designated which species as endangered देखो it's a very beautiful animal it's a very sweet animal किए सिए ना कोआला को रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया कौन करछि ना गोटे एंडेंजर्ड स्पीसीज रो स्टेटस रे पकई दिछि दैट मींस मान को जीवन प्रति सेतिकी कोन अछि ना थ्रेट अछि ओके ड्यू टू पोचिंग और ड्यू टू अदर एक्टिविटीज ठीक है देखले ई स्टैटिस्टिक्स पूरा को होलसे नोटिस करले एक तो ए कोआलास गुडा को पट साइड रे दिसुचंती ऑस्ट्रेलिया रो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे ओके कंजर्वेशन स्टेटस होची एंडेंजर्ड एज यू कैन सी इट हियर अच्छा एडल्ट पॉपुलेशन पाखापाखि केते रहउची ना 92,000 पॉपुलेशन याकर एबे का डेट रे ऑस्ट्रेलिया रे अछि है ना आउ कोन ना गोटे मेल एडल्ट रो वेट 4 रु 14 केजी रहिला बेले फीमेल एडल्ट रो वेट 4 रु 10 केजी रहउची दीस आर ऑल डायमेंशंस ऑफ दिस ओके अच्छा आउ कोन ना दिस एनिमल इज यूनिक टू ऑस्ट्रेलिया इट इज अ ब्रीड ऑफ मार्सुपियल टाइप पिला माने टिके चेक करी कहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मार्सुपियल right so the diet is basically eucalyptus leaf हमें जाको eucalyptus कहउचंती ओडिया रे पंचा ओडिया रे eucalyptus कहंती एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज eucalyptus हां तो ये eucalyptus पत्र गुडा खाई की बचे मोस्टली आ जदी चाइना घरिका रे देखिबा से जो पांडा घरिका से माने बांबू खाई की बचुचंती बांबू शूट्स गुडा ओके माने पाखापाखि सेम टाइप रो कैरेक्टर होची देन you see Australia has recently designated koala as endangered species which has classified as vulnerable only 10 years ago right the impact of prolonged drought kahi ke mane vulnerable he gale gotela drought mane bahut mane दुर्भिक्ष mane मरुडी भलिया कंडीशन समर बुश फायर्स लास्ट ईयर अपन देखिथिबे ऑस्ट्रेलिया रे जंगल रे सब निया लागि इतला these are all reasons kahi ke मानकर संख्या ता कमी जाउची okay next which country is the host of one summit which has been seen in news recently a one summit kiye host kariba recently in France the one ocean summit is being organized by France it ke rectification karibe this is one ocean summit right eta ocean hobo so one ocean summit is being organized by France in cooperation with United Nations and the World Bank tamane if this is a news ताले मन रखथिबे एटा एग्जाम रो क्वेश्चन ही परिबो कहार कोलैबोरेशन रे करिछि या ना यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक इंडिया सपोर्टेड द फ्रेंच इनिशिएटिव ऑफ ए हाई एम्बिशन कोalition on biodiversity beyond national jurisdiction right so India ro at least contribution etik roji next and you know how kono this is aiming to end the single use plastic right तो एटा भी सर्च करिए पिला माने ठीक है what is the meaning of single use plastic अच्छा Belarus is bordered by which sea recently Belarus was in news देखो तो Belarus रो कैपिटल Belarus चाहे काहे की न्यूज रथिला ए रशिया और यूक्रेन रो कॉन्फ्लिक्ट पे right I hope you are tracking that issue से इशू को भलो से पढु चोते आई होप सो कारण कि प्रतिदिन किछि ना किछि नुवा इशू बाहर जे सेतु सो इफ यूक्रेन एंड रशिया वर इन न्यूज सो मझरे बेलारूस पळे एठी तले बेलारूस रो कैपिटल होजी कोन ना मिन्स्क ओके एंड पिला माने मिन्स्क रो दीटा एग्रीमेंट हेछि मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2 ए दीटा जाको देश रो कॉन्फ्लिक्ट को इराडिकेट करिया पई Abhay is correct. Mu marsupial pacharli. Abhay has given the right answer. Right. Thanks for that. So katao ji, you know Russia Ukraine ro jo conflict को minimize करिया पे कौन करा गला ना Minsk agreement हेतला. The agreement was Minsk agreement. All right. So Minsk agreement 1 and Minsk agreement 2. Okay. अपन करो homework होची एटा कोई year रे हेतला. All right. आउ agreement fruitful hella ki nahi sir to apan jani parchanti recent chapter all right so this is nearer to which of the following Belarus is bordered by which sea ko samudra sahita se border share korchi map dekhle apan clearly dekhi pari
You can clearly analyze Baltic Sea तो बहुत दूर रहुची ताले Belarus पाखापाखि कौन से समुद्र ही नहीं. This is the right answer. That means it is bordered by no sea. All right. So एपटे side रे neighboring countries किया होती clockwise Russia, then Ukraine, then Poland, then Lithuania, then Latvia. These are all neighboring countries to Belarus. But Belarus रे कौन से समुद्र रो border नहीं. Okay. Tricky question. हमें गोटे टेम्पटेशन रे आसी कि होय त बाल्टिक सी नॉर्थ सी नले ब्लैक सी को करेक्ट कर दबा टिक कर दबा किंतु practically there is no sea border. Okay, next one. Now what is the official gross domestic product deflator projection for 2022-23? गोटे क्लास रे पिला माने जो माने एसएससी 675 रो पिला 567 सेमान को गोटे क्लास रे पढितली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर. आई होप यू रिमेंबर इट. आउ जो सेशंस करिक हम पढिनी we will talk about it. What is GDP deflator? Okay, so पचारू जी कोन ना what is the official gross domestic product deflator? त माने what is the official GDP deflator? Okay, projected for the next financial year eta kete na 3 ru 3.5%. This is the correct answer. All right, the finance minister said that center's GDP deflator projection is going to be nearly 3 to 3.5%. Okay, so what is a GDP deflator? It is a measure of inflation and is the difference between nominal GDP and the real GDP. Okay, real और nominal भितर जो difference टा आछे ताको हमें GDP deflator कहउछंती. So पिला माने GDP deflator रो formula कोन? GDP deflator रो formula होची कोन ना nominal GDP divided by real GDP into 100. ये क्वेश्चन टा बारंबार एग्जाम रे रिपीट होची. ओके, माइंडफुली याको टिके जानिबे. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? इट इज नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी. होय तो जो क्लास रे एगुडा पढेनी कि जो माने एटा नुवा करी कि जानु चंती, डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट. ओके, ये एमिति नाही कि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग इट टू यू. नाउ MUSC, you can say Muse and Helioswarm, which were in news recently, are associated with which space agency, right? So this is related NASA. Okay, this is related to NASA. पिला माने अधिकांश पिला यार फुल फॉर्म भी जानो मते. I hope you are not one of them. Okay, NASA रो फुल फॉर्म अधिकांश पिला को जाना नहीं. It's very surprising. So check करिए what is the full form of NASA. So NASA has announced 2 new science missions, namely multi-slit solar explorer, multi-slit solar explorer, that is Muse, and the Helioswarm. Okay. The 2 missions aim to study the sun's corona and also measuring the magnetic field of the solar wind. Okay, त माने ए जो दीटा मिशन से तैयारी करछि ना नासा ता पछरे किछटा ऑब्जेक्टिव अछि. एक तो सन रो जो कोरोना अछि जोटा आउटर फील्ड होछि सन रो ताकू मेजर करिवे आ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होछि ना बाय मींस ऑफ द सोलर विंड्स सेगुडा को भी से मेजर करिवो. NASA earlier announced the latest observations done by the Parker Solar Probe. Because recently Parker Solar Probe is nearer, in that region of the sun. So already sun को कौन करूची ना study करूची Parker Solar Probe. Okay, next. So see friends, this is the end of this session. All right, we have completed the most important questions of February 2nd week. All right, so these are all the upcoming batches जो अपन देखिए on the screen, right? चलो, so let's wind up the class today here. पिला माने बारंबार कहूची खाली मु कहि देले होबनी, right? अपन को निजे पढिबा को पडिबो. Every day you have to go through a newspaper. पेपर को वीकली टोटल माने एवरीडे बेसिस रे पढंतु. जेता बेले हमें वीक रो एंड रे एबडा डिस्कशन करू चंती सेता बेले अपन ना मने पकेको चेष्टा करंतु, right? So this is a process actually, and I have time and again told you that you should follow the right process. If you follow the right process, then you will reach to your objective. All right, chalo, let's wind up the class. Thank you so much for your patience hearing.